Onaji, is my screen visible to you? Yes, sir. Okay, so that's great. So let us start our today's lecture, which is about the inverse kinematics of robotic manipulator. We have been talking about the forward kinematics, uh, and this is the converse or inverse of the forward kinematics, and we are going to talk about it today. Uh, this is a topic which has a little more difficulty level as compared to the forward kinematics. So I would request you all. Number one is that we will cover it in two or maybe more than two lectures. Just we will go slowly, and I'll try to interact with you more during the lecture, so that if there is any query, so that is addressed during the lecture. We start with our today's lecture, which is inverse kinematics of robotic manipulator. So how do we define inverse kinematics? We have talked about it earlier, and we have talked about uh, it in a way that in inverse kinematics problem, we are given the position and orientation of the tool relative to the station. We are given the position and orientation of the tool. This is actually tool frame. Let me just write down tool frame with respect to, yeah, relative to, with respect to, yeah, relative to the station frame, relative to the station frame, and we need to calculate the joint angles, and we need to calculate joint angles. And what are these joint angles? These joint angles are varying from theta 1 to theta n. And n will define degrees of freedom of a robotic manipulator. And we have also discussed it earlier that in a space we need to, if we want to define uh, some orientation and position in space. So we want to have n is equal to 6, and if we have n greater than 6, so what type of manipulator is it called? जी थोड़ा सा मुझे आपकी एक इनपुट इसके अब चाहिए होगी कि if we have a manipulator which has more than 6 degrees of freedom, तो हम उसको क्या कहते हैं? Redundant. Redundant manipulator. Very good. So if we have more than 6 degrees of freedom, so that manipulator is called redundant. Redundant, or we say that the redundancy occurs in the manipulator. So this is what is the problem definition. So what we actually what we would be requiring to do while we are dealing with the problem of the inverse kinematics. So we will be solving the problem. Uh, Let me just, we are given the desired position and orientation, position and orientation. And how will we be given this desired position and orientation? G.
we will be given this joint desired variable position. G, sorry, joint इन्वर्स में सर जी जी, वो जो सर क्या कहते हैं रिस्ट फ्रेम जो है ये टूल फ्रेम हाँ हमें टूल फ्रेम, हमें एक गिवन होगा क्या, टूल विद रिस्पेक्ट टू बेस फ्रेम. So we will have this rotation, then position 0 0 0 and 1. So we would be given this desired position and orientation in terms of certain numerical values. So here this will be given to us and we would be required to find out the joint angles. So find the joint angles from theta 1 to theta n, depending upon the number of joints which have these revolute joint or which has the degree of freedom. So this is how we define our problem, and we need to solve for the joint angles. Achha. The next is the solvability. So solvability is something which is going to tell us that does the solution exist. We are going to talk about it in a more detail in the in preceding time of this lecture, and then we will also see that there will be multiple solutions. We are going to talk about it in more detail during the course of today's lecture. So if the solution exists, then it means that we can solve that problem. And number two is that do we have only one unique solution or we have more multiple solutions. So we are going to talk about this. Actually, now what strategies do we adopt in inverse kinematics to solve inverse kinematic problems? So the first is called the closed form solution. We will talk about it. This is actually algebraic solution or geometric solution. So the algebraic solution जो है, this will involves the trigonometry and solving a number of equations solving a number of equations to find out joint variables. ये equations कैसे बनेंगी? We are going to talk about these also. And then the geometric solution is that we draw the geometry. Let's see if in a space I want to reach at this place and I have a manipulator which has, let's see, like this. So what I need to do is that I need to calculate the let me just take another color. So I need to calculate this angle theta, maybe this angle, and I draw this according to the scale and use the geometry to reach to this position and then measure these angles. So this is how I can reach to a solution. But then when there are multiple solutions, so it means that we can reach this place, we can reach this point P in some other orientation also. So it means that we are going to have more than one solution. So all that every time draw this solution will be very cumbersome. So very seldom we resort to the geometric solution if we are unable to find an algebraic solution. Okay? So in this course we will be focusing more on finding out the algebraic solution, in which we will be using the trigonometry and we will be solving equation to find out the joint variables. So we would be dealing more with this. Then the second is the
numerical solution. Achha, what do we do in the numerical solution? Uh, we have some equations with us for all the, you know it, that when we talk about this, when we talk about this, this matrix. So we have values here in this, and these are related to some equations. आपको याद होगा कि ये चीज़ हमने derive भी की थी, और अभी next कुछ slides में I'm going to show that to you also. So just to give you an idea that what would be a numerical solution, that here we have, you know that here we have x, y and z, and this r is in terms of angles, thetas. ये आपको याद होगा. So हम क्या करते हैं numerical solution में, we plug in different values of theta, and using this we try to reach this place. So this is an iterative process. This is an iterative process. So we keep plugging different values of theta and try to solve those equations and reach to x, y and z. So जो भी theta हमारा ऐसा value आ जाती है जो कि हमें x, y, z की position देनी शुरू कर देता है, so हम कहते हैं कि ये this is the numerical solution. Again, there will be multiple solutions. So different values of theta, rather one set of value of thetas is going to give us the position and orientation at x, y, z, and then another set of these joint angles, these joint variables will also give us the same x, y, z, the same position and orientation. So इस लिहाज से the inverse kinematics problem is a little difficult to handle. So we will not go into much detail of this, but this algebraic sum, algebraic solutions और ये चीजें I am going to expose you to these algebraic solutions, and we will in fact solve some problems also which will help you understanding this inverse kinematics. Okay, so this was the overview of the lecture of today, which I wanted to discuss with you. So now we will go step by step, and we will talk about in more detail about all this. So have you been able to understand the overview? यहाँ पे कोई issue, कोई problem तो आपके ज़हन में नहीं आ रही? जी, अगर कोई है तो please हम यहाँ बात करते हैं. Otherwise, if you have some question in mind, so when we go into the details, so you can ask those questions there also. Okay, so let us move forward and talk about something more about the manipulator kinematics or inverse kinematics. So let us see if we look at the first line here. So on towards your right top corner of your slide, you can see this manipulator which has 4 joints and a gripper, and the tool is held in the gripper. So there is a station. This is the station frame which is shown by x0, y0 and z0. So this is a station frame, and this is the tool frame which we have. This is the tool frame which we have, and this is the gripper which is holding the tool. So in fact, what we have been doing in forward kinematics, that knowing these thetas, we were trying to find out this. Now in the converse problem, we are going to find out this position, this vector p, by plugging different values of theta, and in fact calculating these thetas, the joint variables, to reach to this place. So just a repetition here, the manipulator tasks are normally formulated in terms of desired position and orientation. So this is given to you. So a systematic closed form solution. So a systematic closed form solution applicable to robots in general is not available. So a general solution is not available. A general solution से क्या मुराद है? General solution से मुराद ये है कि if I find out one solution, so that solution is applicable to the other manipulator also. So ऐसा नहीं है. So every manipulator will have its own specific
solution to reach to a certain place. Why? Because it will depend upon the number of degrees of freedom that manipulator has, then the link length, then the link twist, and then if that how much degree that joint can rotate. If there is some obstacle or if there is some क्या कहना चाहिए कोई एक constraint है, if there is some constraint and the and a certain joint cannot rotate, let's see, at 360 degree but only at 180 degree or maybe at 340 degrees, so those constraints will come in for that particular manipulator. So यहाँ ये जो लाइन है लिखने का मकसद जो है वो ये है कि थ्रू अ क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन एक जर्नल सॉल्यूशन इज नॉट अवेलेबल कि एक रोबोट से मैं दूसरे रोबोट पे कर दूं. जैसे मैंने कहा था पहले, यूनिक सॉल्यूशंस आर वेरी रेयर. Unique solutions are rare, so there are multiple solutions that exist. So when we have multiple solutions, so we need to have um, let's see, we need to have some rule. We need to have some rule defined to adopt a certain solution. To adopt a certain solution. ठीक है. सो इसका मतलब है कि ये भी एक चीज हमारे एल्गोरिथम का पार्ट होगी. अभी हम बात करेंगे कि ये क्या रूल हमने अडॉप्ट करना होगा जब भी हम when we will have more than one solutions. Then the inverse problem is more difficult than forward problem. We have already discussed this. And why is it more difficult? Actually, the equations which we are dealing with are non-linear in nature. So the equations which we will be dealing with to find out the solution of inverse kinematics, so those will be non-linear equations. So उनका जो solution है वो that will be a difficult task to obtain. ठीक है जी. So if we are clear until this point, so we will move forward, and we are this is again ये repetition चल रही है कि हम थोड़ा सा अपने आप को एक फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स की बात कर रहे हैं और फिर हम फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स को थोड़ा सा मैप करते हैं विद द इनवर्स काइनेमैटिक्स. सो द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स व्हिच रिप्रेजेंट्स the point, the position P and orientation of the tool in the base coordinate frame as a function of joint variables is given by this. We are familiar with this. That this is the transformation of base with respect to tool. So this is known to us, and we know that this is the function of thetas or joint variables, and this is the function of x, y, and z, which gives us the position. And we have talked about it earlier. So how do we define now inverse kinematics is here. You can see it here, that this is the definition of inverse kinematics. Given a desired position P and orientation R for the tool, find values for the joint variables theta which satisfy the arm equation. And what is the arm equation? Actually, this is the arm equation. This is the arm equation. And why do we call it arm equation? Because each value here corresponds to a certain numerical number, and that becomes one equation. अभी हम बात करेंगे कि ये equations हमें कैसे नजर आती हैं और किस तरह से ये हम ये इनको बनाते हैं. Okay, so solvability का हम बात देख रहे थे. So if you now look at this diagram, so what do we see here is that for a joint space in forward kinematics, we know theta, we know the angles, we know the joint variables, and then we find out these two, rotation and position,
of the tool, and we achieve the tool configuration space. So this is the forward kinematics, and its inverse is that we know this tool configuration, we know these two, which is the rotation and the position uh, of the manipulator or of the tool configuration, and we want to find out the theta to go into the joint space. So this is how the solvability of a manipulator in inverse kinematics can be seen with the help of this diagram. All right. So this is the tool configuration space. We are familiar with this. You remember that we derived these equations, or we came across these type of transformation from 6 to 0, which is from the end effector to the base frame. We did it for Puma robot, and these were the equations which we came across in the Puma robot. So very interestingly, what do you need to look here is that in fact this part px, py and pz, these are independent variables. These are independent variables. Excuse me. So these are independent variables. And these px, py, pz, they correspond to this equation. Achha, this is now I am talking about the Puma robot. So just to give you an idea कि Puma robot में हमें ये किस तरह की equations नजर आती हैं. And now what happens here? So we have actually, with the help of, I can find out, we have independent variables of the position. We can have 3 into equations. We have 3 equations and we have 3 variables. Okay. But again, ये जो आप देखें कि ये जो equations हैं, although they are independent, but इसके अंदर भी आपको ये joint variables जो है उनका एक रोल यहाँ पे नजर आ रहा है. And how many joint variables we have? G. How many joint variables we have in Puma robot? G. Can you repeat that? How many joint variables we have in Puma robot? 6. 6. Very good. So it means that we have 6 unknown. So let me just write it down here. So why, if we are solving Puma robot, so we actually have 6 into unknowns. To solve for 6 unknowns, actually we need to have 6 equations. So we have found out 3 equations from here which are independent. Achha, now coming on to the rotation part. So in the rotation part, actually we have this as a vector, this is another vector, and this is the third vector. Now in this vector number 1, r11, r21, r31, these are not independent. Similarly, ये भी independent नहीं है, second vector. So they are all dependent on each other. ये जो vector है आपका जो कि rotation matrix में नजर आ रहा है, so ये independent है. Sorry, ये dependent है. So what we have here, in fact, we will be able to find out one independent variable and equation from here. We will find out one from here, and we will find out one from here. So actually, अगर मैं देखूं तो if I look at these, so these are 9 equations which I have, and out of these 9, I am going to reduce to 3 equations which will be taken one each from these vectors. So we will have 3 into equations more, which will be with which we'll be able to
find out 3 more variables. So now I am going to have 6 set of equations and 6 variables. ठीक हो गया? एक तो ये बात है. अब ये यहाँ तक तो बात बड़ी सिंपल और सीधी नजर आ रही है कि यार 6 इक्वेशंस हैं और 6 वेरिएबल्स हैं. वे जबरदस्त, बहुत अच्छा हो गया. अब इसको मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा एंड आई एम गोइंग टू फाइंड आउट दी वेरिएबल्स. लेकिन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बार बार अभी भी हम रिपीट कर रहे थे, वो है मोर देन वन सोल्यूशन, मल्टीपल सोल्यूशन. So what happens to reach to a certain orientation and a position by the end effector, there are going to be different configurations or different values of thetas, different values of thetas. So वो जो पीछे हमारे तीन जो 6 वेरिएबल्स हमारे जो हैं जिस जो कि थीटास की फॉर्म में हैं, तो वो जो थीटास हैं वो मुझे मोर देन वन फॉर्म सोल्यूशन देंगे. सो यहाँ पे ये नॉन लीनियर इक्वेशंस जो हैं ये मेरी कैलकुलेशन में एक मुश्किल पैदा करना शुरू कर देंगे. हाउएवर इसके सॉल्यूशंस जो है वो लोगों ने बनाए हुए हैं एंड वी विल डिस्कस दोस सॉल्यूशंस आल्सो. अंटिल नाउ आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं यहाँ पे इसका आंसर करता हूँ, अदरवाइज हम फिर इसको आगे मूव कर जाते हैं. सो ये वो चीज़ें हैं जो एक्चुअली हमें ये बता रही हैं कि क्या ये प्रॉब्लम सॉल्वेबल है कि नहीं. Yes, we can see from here that this problem is solvable because we have 6 equations and 6 variables. So from 12 equations, we have reduced our problem to 6 equations since we had 6 variables. जी, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ आ रही है and are we on the same grade? Somebody to please respond. Yes, sir. Okay. So if we do not face any problem until here, so इसका मतलब है कि ये एक कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा आहिस्ता आहिस्ता अब बिल्डअप होना शुरू हो गया. So that's very good. So we move forward and we have already talked about this in detail कि ये जो 6 equations हैं ये कैसे हमें यहाँ पे जो है वो नज़र आती हैं. So what we have done here, just to summarize, we have actually we had 12 equations initially and we had 6 unknowns. So in order to reduce our equations, we took 3 equations, 3 into equations were taken from the position part and 3 equations were taken from rotation part. From the rotation part. So at the end, what we have here with us, we have 6 equations, non-linear in nature, ये ज़हन में रखिएगा, and 6 unknowns. So this gives us the solvability of the robotic manipulator. Okay, so 12 equations, 6 unknowns. Out of 9 equations of rotation part, only 3 were independent. ये हमने बात कर ली. From position vector part, there are 3 independent equations and 6 independent equation and n unknowns, which is n is equal to 6. So we should be able to find out the solution. Okay, so let us move forward. Non-linear है ये हम बात कर चुके हैं, so they are difficult to solve. ये हम पहले बात कर चुके हैं. All right, so let me, if this is creating a confusion, so let me just erase this
All right. So now let's move forward and now talk about the existence of solution. अच्छा, क्या है जी? A manipulator is solvable. A manipulator is solvable if all sets of joint variables can be found corresponding to a given end effector location. ये हमने बात अभी पिछली स्लाइड पे की कि वी नीड टू फाइंड आउट द जॉइंट वेरिएबल्स, और जितने नंबर ऑफ जॉइंट वेरिएबल्स हमने फाइंड करने हैं उतनी नंबर ऑफ इक्वेशंस हमारे पास हैं, तो हम कहते हैं कि दिस इज अ सॉल्वेबल प्रॉब्लम. सो यही बात यहाँ पे लिखी है. So before going on to the solution, let me first introduce here the terminology, the dexterous space and the reachable space. So just look at the definition of dexterous space. So dexterous space is that volume of space that the end effector can reach with all orientations. All orientation से क्या मुराद है कि let's see if I have a part here and I want to pick it up with the help of the gripper. So gripper इस पार्ट को हर तरफ से अचीव, मतलब यहाँ से भी इसको कर सके, रीच कर सके. लेट्स सी आई मेक वन मोर, यहाँ से भी इसको रीच कर सके. देन लेट्स सी इस तरफ से भी इसको रीच कर सके एंड इस तरफ से भी रीच कर सके. सो ये तो मैंने सिर्फ 4 बताई हैं, लेकिन डेक्स्ट्रस स्पेस ये है कि वो 360 डिग्रीज इसको हर तरफ से, अगर मैं 2 डिग्री, अगर मैं इस प्लेनर रोबोट की बात करूं, लेट्स सी ये जो मैंने ग्रिपर बनाया था ये एक प्लेनर रोबोट है, तो वो इसको 360 डिग्रीज हर तरफ से इसको अचीव कर सके. सो देन वो स्पेस या वो पॉइंट जिस पे a manipulator or an effector can reach to that particular position with all orientations is called dexterous space. ठीक है. और सेकंड क्या है? reachable space. reachable space क्या है? reachable space is defined is that volume of space that the end effector can reach in at least one configuration. So let's see if I have something here which is to be picked up. So at least एक configuration में if the gripper or the end effector of the manipulator can reach in one configuration, at least one configuration, so that is called our reachable space. So now let me just give you an example of this. Let me erase this, and so let us see the necessary conditions, but first of all let's see what the tool point within the workspace. So if let's see if I have this manipulator, so there is a workspace in which it can move. So let me just draw that workspace. So, let me just put this down, and let's see. So if this angle can rotate 360 degrees, मैं एक आइडियल कंडीशन की बात करने लगा हूँ. सो अगर मैं ये कहता हूँ कि ये लेट्स सी इफ दिस वाज θ1 और ये 0 से लेके 360 डिग्री तक रोटेट कर सकता है. Similarly, we have θ2 here which can also rotate from 0 to 360 degree. So what can I now draw? Let's see. Let me put one condition here also. Let's see, L1 is equal to L2. So this is the condition. So I am now going to draw the workspace for this manipulator while L1 is equal to L2. So if this is the center point, so I am going to have a circle
like this, and this is the center point with a radius L1 plus L2. ये इसकी मैक्स हो गई. Number 2, if I fold this onto this, so how would this look like? This will look something like this, and since L1 was equal to L2, so this becomes L1 और ये मेरा बेस था. So अब ये जो पॉइंट था, ये जो मेरा एंड इफेक्टर था, this has come down to the base. So this is the dexterous space for this particular configuration, that this manipulator end effector, which is here, can reach this base point in all 360 orientation. So this green point becomes its dexterous space. However, in all other, in this space, which is, let me just make this space like this. So ये जो space है जो मैंने ये draw की थी, इस space के अंदर there is no other point कि जिसको ये end effector तमाम orientation में reach कर सके. अच्छा, ये देखिए, यहां तक ये बात समझ आती है. अगर आपको ये बात समझ आई है तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा. फिर जी, मुझे कोई रिस्पॉन्ड करे कि ये जो मैंने वर्क स्पेस बनाई थी इस पर्टिकुलर रोबोट के लिए, व्हेन इट वाज फुली एक्सटेंडेड, तो ये L1 प्लस L2 इसने पूरा एक हमें रेडियस बना दिया. फिर मैंने इसको फोल्ड किया और L2 को मैंने L1 के साथ मिला दिया, एंड देन जो एंड इफेक्टर है वो इस ग्रीन वाले पैच को तमाम ओरिएंटेशन में अप्रोच कर सकता है. सो ये मेरी डेक्स्ट्रस स्पेस होगी. यहां तक बात समझ आ गई? यस सर. ओके. अब ये जो मैंने लाइंस के साथ जो स्पेस बनाई है, ये स्पेस क्या कहलाएगी? सर जो पर्पल है सर. जी, जो मैंने ये पर्पल कलर की जो मैंने लाइंस के साथ एक स्पेस बनाई है, which has a radius of L1 plus L2, what would this space be called? इसको जो वर्क स्पेस है Reachable space. This will be called a reachable space. Because this will be called a reachable space because every point in this space can be reached by the end effector in not in all orientations, but at some places or one orientation only, and some places more than one orientation only. Let's see. ये जो मेरा let me just take up this color. So ये जो इसका circumference है, circumference पे किसी भी जगह पे ये जो मैं चीजें, ये जो मैं गोले बना रहा हूँ, these are actually the points where we want to reach. So on the circumference, my manipulator can reach at a certain point in only one configuration. But one configuration में अगर हम reach कर सकते हैं, so that becomes our reachable space. So this is the reachable space for the maximum extent of the reachable space for this manipulator, which I have shown here. This is a planar manipulator. मैं इसको बार-बार जो आपको बता रहा हूँ. So this is, and within this, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ कहीं इस इलाके में, so it may reach in more than one configuration, but in all configuration it cannot reach in this space. So there is only one place, only one point where it can reach in all configurations, and that is actually called the dexterous space. So let me just give you another example. So let's see, if L1 is not equal to L2, so what will happen? And we say that L1 is actually greater than L2. हम ये बात करते हैं. So now if I draw this,
So this is the base. Let me just take the अब ये गौर से देखिएगा. This is the center point. This is the center point. Again, इसकी जो outer space है, थोड़ा सा सेंटर गड़बड़ हो गया. Let me just put it right. So let's see, this is the center point. Okay, so the outer space, this is still L1 plus L2. लेकिन अब जब मैं इसको फोल्ड करूंगा तो इसकी यहां क्या बनेगा. अब मैं जरा ये वाली डायग्राम दोबारा ड्रॉ करता हूं. सो दिस इज माय L1 और जब मैं L2 जो इससे छोटा था, जब मैं उसको यहां से बनाता हूं तो L2 is going to come until here. So this is L2, this is L1. So up there is going to be another circle here like this, which will have a radius of L2. और अब इस कंडीशन में मेरी जो स्पेस है, जो रीचेबल स्पेस है, दिस विल बी लाइक दिस. ठीक है. सो अब ये जो ग्रीन सर्कल के अंदर जो स्पेस है, दिस इज आउट ऑफ रीच फॉर दिस रोबोट. ठीक है. तो ये पे आपको बात समझ आ गई थोड़ी सी. जी, somebody to please respond. yes sir, आ गया. Okay, so ये जो concept है ना, the dexterous space and the reachable space, so I've tried to give you that concept here, and this is for a planar robot, ये जो मैंने आपको, so that you can understand this. So let's see if I put another degree of freedom into it and it can start moving in Z also. So तब क्या होगा अगर इसी स्पेस के साथ you have one more degree of freedom in which the robot or the end effector can move in Z direction also, which is coming out of the board or out of the slide. So what will happen? Reachable space जो है वो एक ball of cylinder. एक देखिए बिल्कुल सही. अगर if I have understood you well, so in fact मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बनाता हूँ. ये मैंने बीच में से एक आपको कट पोर्शन दिखाया. So this is actually going to be a sphere. ये ऐसे मैं इसको ऐसे ऐसे ऐसे. ठीक है. So this is actually going to be a circle जो कि एक ट्यूब की फॉर्म में ऐसे गोल घूम रहा है. ये मैं इसके साथ रिलेट कर रहा हूँ इसको. मैं इसको इसके साथ रिलेट कर रहा हूँ. तो वो जो आप सिलेंडर कह रहे थे, so it is actually is a circle or a cylinder which is moving like this. I don't know if you are able to see. No, I think you are not. Do not. Let me just switch on the camera so that you can see my hand movements also. Okay, so now you can see my hand movements. So this is a side circle. If you can see now my hand movement, this is a side circle and it is moving like this, and it's a tube which is rotated or which is given a circle. ठीक है जी. सो ये ज़हन में रखना है कि हमने ये जो कंडीशंस अप्लाई की थी L1 L2 और जिसमें कि पहले L1 L2 के बराबर था, सेकंड कंडीशन में L1 was greater than L2. So this is how our space would look like.
and if we add one more degree of freedom at the joint or at the gripper, and it can rotate in z, ऐसे z direction में, so it can come out of the slide and go into the slide. So this is how it is going to look like to us, जो I have tried to make it here. ठीक है जी. So ये दो चीजें मैंने आपको यहाँ से दिखा दी. So if we have degrees of freedom n 6 or more than 6, तो हम टूल को किसी भी ओरिएंटेशन में अपनी वर्क स्पेस में पहुंचा सकते हैं. ये ध्यान में रखिएगा कि if we have the degrees of freedom 6 or more than 6. अच्छा, लेकिन ये डिपेंड करेगा. ये मैं बिल्कुल एक आइडियल कंडीशन की बात कर रहा हूं जिसमें तमाम जॉइंट्स पे रोटेशन जो है वो 360 डिग्री है. ये मैं उस कंडीशन की बात कर रहा हूं that a robot having 6 degree of freedom can have orientation, any orientation of the tool. But this would only be true if all the joint variables can rotate at 360 degrees. But there will always be constraints. There will always be limitations. So the joint may not be able to rotate at 360 degrees. Some of the joints may, but all the joints may not be able to rotate at 360 degrees. So that will become a constraint for us, and that will actually reduce our workspace, which is reachable or dexterous. So dexterous or reachable space को जब मैं mix या मिला लेता हूँ आपस में, so that actually becomes the workspace of my manipulator. ठीक है? So the last point is the tool orientation is such that none of the joint limitations are violated. ये वही बात है जो मैं आपसे कर रहा था कि टूल की ओरिएंटेशन तब हो सकती है 100% या ऑल ओरिएंटेशन जब जॉइंट की लिमिटेशंस जो है वो ना हो. अगर जॉइंट की लिमिटेशंस आ जाएं और उनको आप फिर वायलेट नहीं कर सकते तो फिर टूल की ओरिएंटेशन जो है वो डिफरेंट हो जाएगी. ओके, अब मुझे बताइए जी, यहां तक आपको ये वर्क स्पेस का कॉन्सेप्ट, डेक्स्ट्रस स्पेस का कॉन्सेप्ट और रीचेबल स्पेस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया जी? somebody to please respond. Yes, sir. ओके, एनी क्वेश्चन? कोई किसी स्टूडेंट को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो? Okay, so if no, so let us move forward, and now we are going to talk about the multiple solutions. Again, मैं एक planar arm की बात करने लगा हूँ. A planar arm which has 3 joints. This is joint number 1. This is joint number 2. This is joint number 3, and we have the tool frame here. Okay. So let us just read this. A planar arm with 3 revolute joints has a large dexterous space in plane because any position in interior of its workspace can be reached with any orientation. देखिए planar robot, ज़हन में रखिएगा कि ये planar robot, ठीक है? अच्छा, अब इसकी भी ज़हन में रखिएगा कि एक तो इसकी मैक्स होगी, जो इन तीनों को मैं बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट कर लूं जॉइंट्स को, तो एक पूरा सर्कल जो है वो इसका लग जाएगा. दूसरा क्या है कि मैं इसको भी फोल्ड करूं और इसको भी इसके साथ फोल्ड करूं तो मैं आई कैन रीच हियर आल्सो हर कॉन्फ़िगरेशन में. लेकिन जो मेरा पेरिफेरी होगा, ये मेरे अगर आप हाथ की तरफ देखें तो जो मेरा पेरिफेरी होगा, दैट विल नॉट बी डेक्स्ट्रस स्पेस फॉर दिस पर्टिकुलर रोबोट. बट इनसाइड दैट वो वाली स्पेस जिसमें के इससे नीचे जितनी ये लेंथ है, let me, if I can draw it clearly. So let's see if this one L2, L1, L2 और इसको मैं L3 कह देता हूँ. तो एक तो जो मेरा आउटर ये वाला पोर्शन है, ये तो मुझे क्लियर नजर आ जाएगा कि दिस इज L1 plus L2 plus L3. अच्छा,
अब एक और मैं ले लेता हूं जिसके अंदर लेट मी जस्ट ड्रॉ हियर जो कि L1 प्लस L2 है और एक में L1 प्लस L2 में से L3 माइनस करके एक बनाता हूं। ये वाला विच इज L1 प्लस L2 और इसमें से L3 माइनस कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन को देखूं तो ये मेरा L1 है, यहां से ये मेरा L2 है और L3 जो है वो वापस वापस मुड़ गया हुआ है। सो दिस इज L3। तो ये एक्चुअली इस तरह से ये स्विच बन गया। सेंटर ये है और ये है। लेट मी जस्ट ड्रॉ इट अगेन। लेट मी erase this. So taking the center here, taking the center at this place, so ये कुछ इस तरह से ये जाएगा। सो इस स्पेस के अंदर ये जो मैंने यहाँ पे ये स्पेस बनाई है जो कि आपको यहाँ नजर आ रही है ये मैजेंटा कलर की, ये स्पेस इसके लिए एक एक्स्ट्रा स्पेस होगी और बाकी जो है वो रीचेबल स्पेस है। सो रेड कलर के जो हमारा साइड सर्कल है बाहर, उसके ऊपर ये सिर्फ एक ओरिएंटेशन में जा सकता है। उससे लेके जो मैजेंटा कलर का सर्कल है वहां तक ये मोर देन वन कॉन्फ़िगरेशन में जा सकता है और इनसाइड द मैजेंटा इट कैन गो इन ऑल कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है। सो ये हमें यहाँ पे इसकी प्लेनर आर्म की नजर आ गई। ओके, बहुत ठीक हो गया। नाउ लेट्स सी व्हाट इज दिस। दिस इज एल्बो अप एंड डाउन पोजीशन। ये कैसे है? लेट मी जस्ट अरेज, लेट्स नॉट अरेज ताकि ये आपके पास मौजूद रहे। सो इस पर्टिकुलर कोड ओके। सो ये जो मैं डायग्राम यहाँ उठा के लाया हूँ ये वाली, I want to reach at this place here. So there can be two solutions. इसको मैं कहता हूँ कि if I go with this configuration, ये वाली, this is called elbow up orientation. And I do not move this, I keep this stationary. I keep this stationary और सिर्फ इस जॉइंट को यहां नीचे ले आता हूं। सो दिस इज कॉल्ड एल्बो डाउन ओरिएंटेशन। तो स्ट्रेट अवे मुझे ये नजर आ गया कि किसी भी एक पोजीशन के ऊपर आई कैन हैव मोर देन 1 डिग्री ऑफ मोर देन वन सोल्यूशन किसी भी एक जगह के ऊपर। सो दिस इज कॉल्ड एल्बो अप एंड एल्बो डाउन। सो एक ये चीज होगी। देन द मल्टीपल सोल्यूशन कैन कॉज प्रॉब्लम्स as the system must choose the closest location, the closest solution. So अब ये वो चीज आ गई जब मैं कहता हूँ ना कि we have more than one solution, तो ये देखिए अब ये क्या आ रहा है। When I say that I have more than one, why is it not working? Okay, it has not started working. So if I have, let's see, I have an obstacle here, ये देखिए, if I have an obstacle here, सो ए को मैं इस ऑब्स्टिकल के इधर से रीच कर सकता हूं लेकिन ए को मैं एल्बो डाउन पोजीशन से रीच नहीं कर सकूंगा।
बिकॉज ये ऑब्स्टिकल इसको स्टॉप कर देगा। सिमिलरली अगर मैं ये डॉटेड देखूं तो इस पॉइंट बी को आई कैन अप्रोच इन एल्बो डाउन पोजीशन, बट आई कैन नॉट अप्रोच बी इन एल्बो अप पोजीशन, and this is because of this obstacle. So now let's see if my manipulator is somewhere here, इधर था ये ऐसे, and I ask this manipulator to reach to A. So now it should know that there is an obstacle here, so it should go, it should not try to go from here and try to reach here, try to reach A. Rather, it should straight away go from here, because it has to know that it can reach A only in this configuration. So वो कैसे, वो मुझे इसको क्लोजेस्ट सॉल्यूशन की फॉर्म में उन थीटास का, उन एंगल्स का, उन जॉइंट वेरिएबल्स की वैल्यू देनी पड़ेगी कि पॉइंट ए को रीच करने के लिए इसको अपनी कॉन्फ़िगरेशन क्या रखनी है, बिकॉज एल्बो डाउन पोजीशन से वो पॉइंट ए को रीच नहीं कर सकते। ठीक है, एंड देन अगर यहां तक आपको ये चीज क्लियर है तो आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग वन मोर टर्मिनोलॉजी हियर व्हिच इज more than 6 degrees of freedom. It is called kinematically redundant. So ये बात मैं पहले कर चुका हूँ, इसका जवाब आपने दिया था, सो इसकी मैं और डिटेल में नहीं जाऊंगा। सो अब मुझे बताइए कि ये मल्टीपल सॉल्यूशन और ये स्पेस, ये वाली चीजें आपको क्लियर हो गई? जी, somebody to please respond so that we can move forward. सर जी सर ये एल्बो डाउन पोजीशन में कुछ हमारी ऐसी है कि उसमें स्क्रीन जो है उससे नीचे जा रहा है एल्बो, तो अगर वो हमारे पास लिमिटेशन है तो हम उसको कैटर फॉर करेंगे? नहीं, एल्बो कहाँ नीचे कैसे जा रहा है, मुझे जरा दोबारा बताइएगा। सर अगर फ्लोर एक्सटेंडेड हो, अगर सर फ्लोर एक्सटेंडेड हो, अगर यहाँ जहाँ मेरी जो सपोर्ट दिख रहा है इसकी जगह हमारे पास फ्लोर हो, फ्लोर हो, ओके ओके सर ओके, ये ठीक ठीक है ठीक है, लेट्स सी। आप ये अच्छा देखिए, ये हम ना प्लेनर रोबोट की बात कर रहे हैं, एक्चुअली हम ये प्लेनर रोबोट की बात कर रहे हैं। तो इसका जो फ्लोर है वो इस स्लाइड, ये स्लाइड इसका फ्लोर है एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि इसका जी जो है ना वो इस स्लाइड के अंदर जा रहा है वन का। तो इस पर्टिकुलर रोबोट के लिए, चूंकि ये एक प्लेनर रोबोट है, तो वी आर ओनली डीलिंग विद प्लेन, और वो प्लेन क्या है, ये स्लाइड है। और अगर आप जिसको फ्लोर कह रहे हैं तो आप ये देख लें कि ये आपको ये स्लाइड इज एक्चुअली फ्लोर, और आप इसको टॉप से देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि अगर कोई वो क्या कहते हैं कोई ऑब्स्टिकल हो, तो अगर नीचे वाली साइड पे हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे? वो ये जी सही है, बिल्कुल, वो ऑब्स्टिकल कहीं भी हो सकती है। लेट्स सी, मैंने आपको ये ऑब्स्टिकल यहाँ दिखाई थी ना, अभी यहाँ दिखाई मैंने आपको ऑब्स्टिकल, ये ऑब्स्टिकल कहीं भी हो सकती है। लेट्स सी, मैं इस ऑब्स्टिकल को यहाँ रख देता हूँ, तो फिर मेरी कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से, और लेट्स सी, थोड़ा सा मैंने एक्सेजरेट कर दिया, लेट मी जस्ट इसको दोबारा बना देता हूँ। सो तब क्या होगा, ये और इस तरह, ठीक है। और यहां से अगेन मैं इसके, ये इसका एल्बो अप होगा, दिस विल बी एल्बो अप, बट एल्बो डाउन इसका पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। डज दिस आंसर योर क्वेश्चन? यस सर। तो बस ये ज़हन में रखिएगा कि जो प्लेनर है, तो इसकी जो प्लेन है वो एक्चुअली हम ऐसे कह रहे हैं कि वो फ्लोर जिसको आप कह रहे हैं वो प्लेन ऐसे है, और वी आर लुकिंग एट इट फ्रॉम द टॉप लाइक दिस। ये अगर आप मेरी
कैमरा की तरफ देखें तो यू कैन सी कि ये मेरा फ्लोर है और मैं इसके उसके ऊपर से यूं देख रहा हूँ और वो डायग्राम या वो मुझे यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ नजर। ओके, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड नाउ ओके चलें, प्यूमा वाली बात भी ठीक है, ये भी एक आपके सामने अगेन मैं ले आता हूँ। Puma has 6 degrees of freedom and Puma can reach within its workspace, it can reach to a certain point in 8 different orientations. So it means कि एक पॉइंट को रीच करने के लिए Puma के पास 8 solutions हैं. So Puma has 8 different solutions to reach to a particular point. So let's see. This is solution number 1. This is elbow down. This is solution number 2. Again elbow down. लेकिन देखिए कि ये पूरा 360 रोटेट करके, इट मीन्स कि ये यहाँ से जब ये ऐसे पूरा रोटेट किया इधर तो इस कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। जी, आप विजुलाइज कर रहे हैं ना इसको, नंबर 2 को, नंबर 2 को विजुलाइज कर रहे हैं ना? यस सर, वो पीछे की तरफ छोड़ गया। लेकिन हाँ, बट ये जो है, सॉरी, ये मैंने इसकी बिल्कुल, आई एम सॉरी, ये मैंने इसको गलत रोटेशन में बना दिया। इसकी रोटेशन एक्चुअली इस जॉइंट के अगेंस्ट हुई है, इस वाले जॉइंट के अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट पूरी 360 की रोटेशन होके तो ये दूसरी तरफ आ गया। एक चीज, अब दूसरा देखें, इसी तरह ये एल्बो अप पोजीशन है, सो दिस इज 3 और पूरा रोटेट होके आ गया तो दिस इज अगेन एल्बो अप एंड दिस इज 4। और इसमें क्या हो सकता है, मैंने 8 कहा था। सो इफ वी फ्लिप द रिस्ट, if we flip the wrist, so flipping the wrist, इन्हीं 4 कॉन्फ़िगरेशन में, सो एक कॉन्फ़िगरेशन में फ्लिप कर दूं तो I can have 4 into more solutions, ठीक है। सो दिस इज हाउ ये 8 सॉल्यूशंस जो है वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे फॉर प्यूमा रोबोट दैट इट कैन रीच इन 8 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस। ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड देन मैं टॉक अबाउट सम मेथड ऑफ सॉल्यूशंस, जो हम पहले इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था हमने। सो मैं एक इसके अंदर थोड़ी सी रेपिटेशन आपके लिए दोबारा कर दूंगा। सो देयर कैन बी 2 काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन, there can be 2 kinds of solution. One is the closed form solution. इसको हमने कहा था कि ये एक analytical expression होगा, जो क्या था, जो algebraic था और साथ में क्या था algebraic के, geometric, ठीक है। और numerical solution जो है वो iterative था और time consuming था। And we have talked about it a little earlier that if we are not able to find out a solution through algebraic or geometric methods, so we need to then go with the numerical solution or numerical method solution, which is although time consuming but still it gives us a solution, ठीक है जी। So what would be the sufficiency conditions for a closed form solution? So the sufficiency conditions are a manipulator which has 6 joints, so its 3 adjacent joints should be intersecting with each other. और मैं यहाँ पे एक साथ इसके और डाल देता हूँ, we can find a solution, a closed form solution, if a 6 degree of freedom robot has 3 intersecting joints जो कि adjacent होंगे। Okay, now there is a question. Let's see, in a 6 degree of freedom robot जो कि हमने प्यूमा को डिस्कस किया था, उसके कौन से joints हैं जो intersecting हैं? Wrist, very good. So किसी भी रोबोट में अगर रिस्ट मौजूद है जिसके तीनों जॉइंट्स इंटरसेक्टिंग हैं, तो इसका मतलब है कि वो आपको एक क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन दे सकता है।
एक बात। दूसरा क्या है, किसी भी मैनिपुलेटर में अगर 3 एडजेसेंट जॉइंट हैं जो कि पैरेलल हैं टू ईच अदर, which are parallel to each other, तो still it can give you a closed form solution. अभी हमने देखा प्लेनर रोबोट में, आपने देखा कि we saw 3 degrees 3 joints जिनके के z's हैं, they were coming out of this slide, so वो तीनों पैरेलल थे और उन पैरेलल की ऐसे you could see that we could have a closed form solution. So ये एक sufficiency condition है to reach to a closed form solution. तो अगर मैं 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात भी कर लूं और उसमें मेरे पास 3 इंटरसेक्टिंग हो तो आई कैन रीच टू अ क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन। 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, उनमें से 3 जो हैं वो एडजेसेंट हैं and the 3 adjacent are parallel, so I can still get a closed form solution. Okay जी, so अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराने की बात करूंगा, ताकि अब तक हमने जो ये इक्वेशंस की बात की थी, सॉल्यूशंस की बात की थी, अच्छा दिस अगर आपको नजर आए तो ये दिस इज अ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये हमने पहले देखा हुआ है। इफ यू लुक एट हियर, सो इन फैक्ट वी हैव वन रोटेशन हियर व्हिच इज थीटा 1 and then this is a prismatic joint which can move like this, so it's a 2 degree of freedom robot, but इसमें जो revolute joint है वो एक ही है। Okay, so what we are interested in to find out the theta, so it means that there is only one variable which we need to find out, which is theta 1. So यहाँ जो मैंने आपको ये एग्जांपल है आपकी बुक में, एग्जांपल ये बुक में बिल्कुल इसी तरह हुई है, I have just picked it up and placed it here. लेकिन ये हमने कैसे अचीव किया, ये मैं अब आपके साथ इसको थोड़ा सा सॉल्व करूंगा। सो लेट अस सी, सबसे पहले तो मैं ये बात करता हूँ कि इसका पहली चीज क्या है। सो गिवन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सबस्पेस व्हिच इज T2 to 0, so tool frame 2, so this is tool frame 2, actually this is frame 2, तो इस फ्रेम को अगर मैं यहाँ पे 0 बना दूं, this is Z0 and this is, let's see, X0, so yeah, this is tool frame 2, this is 0 frame. So in fact I am interested to find out the transformation in which can give us 2 relative to 0 for the polar manipulator with 2 degrees of freedom, which is shown here. So we have P2 origin with respect to 0 is xy only, इसमें z जो है वो 0 है, ठीक है। तो ये दिस इज ओनली इन x एंड y, z में इसकी मूवमेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट ऐसे नीचे नहीं आ सकता, इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, ठीक हो गया। सो x y और 0, तो इसका मतलब है कि ये अगर मैं इसको टॉप से देखूंगा तो मुझे ये ऐसे प्लेन में एक मूव करता हुआ नजर आएगा। सो इट कैन ओनली रोटेट लाइक दिस और इट कैन एक्सटेंड इटसेल्फ लाइक दिस। So it can only rotate like this and it can extend itself like this. So ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। So ये PB origin, जो P2 origin है, this can be given by x and y. अच्छा, now where x and y can take any values, okay, ठीक है, the orientation is restricted because of the z-axis, क्योंकि z-axis में movement है ही नहीं, must point in a direction that depends on x and y. So x और y जो हैं उस पे z का कोई डिपेंडेंसी नहीं है, rather z जो अपनी जगह पे मौजूद है जिस प्लेन में, उसमें x और y ही सिर्फ मैटर कर रहे हैं। देन एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपने यहाँ देखनी है कि जो y का डायरेक्शन है, जो y का डायरेक्शन है, गौर से देखिएगा कि जो y का डायरेक्शन है, दिस इज ऑलवेज इट इज गोइंग टू पॉइंट डाउनवर्ड, ठीक है। इस 2 की बात हो रही है, 2 में जो y है इज ऑलवेज गोइंग टू गो डाउनवर्ड्स, ठीक है। एंड देन ये जो x को मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो मैं y और z के क्रॉस प्रोडक्ट से x को
फाइंड कर लूँगा। सो जब मैं x और y की टर्म में इसको डिफाइन करना चाहूँगा, सो एक्चुअली ये this will correspond to this and this will, oh sorry, जीरो नहीं बीच में आएगा, ठीक है। और मेरा जो सब स्पेस है जो कि 0 से t है वो मुझे इस फॉर्म में नजर आना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज एक्चुअली, दिस इज c1, दिस इज माइनस साइन 1, दिस इज साइन 1, दिस इज cos 1। ये कैसे है, अब मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। सो लेट मी जस्ट फर्स्ट इसको मुझे ड्रॉ करने दें इसका DH टेबल। सो इफ आई ड्रॉ द DH टेबल, सो DH टेबल में क्या होता है, मेरे पास i होता है, अल्फा i माइनस 1 होता है, देन ai माइनस 1 होता है, देन di होता है और थीटा i होता है। सो आई हैव टू जॉइंट्स 1 and 2। सो फॉर 1 अल्फा i माइनस 1 विल बी 0, ai minus 1 will be 0, di would be 0 and theta I will be theta 1. Second में this will be minus 90, ai minus 1 will be equal to d1। ये जो कि इसकी मूवमेंट आपको याद है कि ये इसकी ये वाली मूवमेंट है, ये वाली मूवमेंट है, प्रिज्मेटिक जॉइंट है। सो दिस इज d1, sorry, I'm sorry, I minus 1 is 0, offset is d1 and theta 2 will be 0. So this is my DH table for this particular robot. ये हमने पहले इसको डिस्कस किया भी हुआ है, मैं सिर्फ इसको यहाँ पे, अगर आप इसको दोबारा करना चाहें तो इसको आप बना के देख भी सकते हैं। एंड नाउ जब मैं इसके ये corresponding वो करूँगा, so t 0 to 2 would look something like this, cos 1 minus sin 1, sin 1 cos 1, सॉरी दिस इज सिंस अबाउट y है तो ये इस तरह आएगा, सॉरी, सो 0 0 एंड दिस इज sin 1 cos 1 0, और ये हम दिखा चुके हैं कि ये y जो है माइनस में जा रहा है, तो उस तरह भी बन सकता है, या मैं इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तब भी इसी तरह से बन जाएगा। एंड अब इसका जो x है, this will be minus d1 sin 1, minus d1 sin 1, or this will be d1 cos 1, this will be d1 cos 1 0 and 0 0 0 1। so ये इसका मेरे पास प्रोटेक्शन मैट्रिक्स आ गया। ओके, थोड़ा सा मैं अब इसके करस्पॉन्डिंग आपने देख लिया कि मैंने जो करस्पॉन्डिंग बात की थी कि एक्स वाई जो है वो क्या है, ये सो दिस इज करस्पॉन्डिंग टू एक्स, लेट मी जस्ट, this is corresponding to x and this is corresponding to y. So let me just write it down. So x will be equal to minus d1 sin 1 and y will be equal to d1 cos 1. Actually what I am interested in, I am interested in to find out cos and sin. ठीक है, सो अब देखते जाइए कि ये मैं कैसे, तो दो अननोन, दो इक्वेशंस, दो अननोन, बल्कि एक अननोन और दो इक्वेशंस हैं इस वक्त मेरे पास। और अननोन क्या है, एक मेरे पास वो है थीटा 1 है जो कि मैं जानना चाहता हूँ, और एक मेरे पास d1। ओके, सो लेट अस सी, सो मैं कैसे इसको फाइंड आउट करता हूँ। सो लेट अस सी, अगर मैं इसका स्क्वायर कर लूँ दोनों को और ऐड कर लूँ आपस में, दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करूँ और ऐड कर लूँ, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वुड बी इक्वल टू व्हाट, वुड बी इक्वल टू d1 s1 square plus d1 square, d1 square s1 square plus d1 square cos 1 square।
और इसमें से मैं d1 स्क्वायर को कॉमन ले लूँ, सो दिस विल बी s1 स्क्वायर प्लस cos 1 square which is equal to 1, so this will be equal to d1 square, so x square plus y square will be equal to d1 square. So मेरे पास या ये d1 की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ. So let us now put it back here, because क्या था कि मैं x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ. So if I put it back this here, so यहाँ से मेरे x की वैल्यू क्या आ सकती है. So x will be equal to, जो कि मुझे क्या पता था, d1 sin theta 1, x is equal to d minus d1 sin 1, और मैं यहाँ से अगर sin 1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो sin 1 की वैल्यू would be minus x over x square plus y square under. सिमिलरली मैं y में इसकी वैल्यू डाल दूँ, यही वाली वैल्यू y में डाल दूँ तो y इज इक्वल टू d1 cos 1. सो यहाँ से जो cos 1 है वो किसके बराबर हो जाएगा, y ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट. सो sin 1 cos 1 जब मुझे मालूम हो गया तो नाउ आई कैन फाइंड थीटा which is theta 1, which will be a tan 2 sin theta 1 cos theta 1. आपको याद होगा ये हमने पहले भी इसके ऊपर जब हमने फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे तब हमने इसके ऊपर ये वाली बात की थी. सो दैट हैज नाउ कम अप हियर. तो अब आप देखें कि ये जो मेरा ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है वो थीटा की वैल्यू नोइंग द पोजीशन, तो मैं थीटा की वैल्यू मैंने कैसे कैलकुलेट कर ली. सो दिस विल बी गिवन टू मी बाय दिस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स. सो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन हियर, 0 to 2. So what is cos 1? This is y over x square plus y square under root 0. s1 मेरा ख्याल में ये माइनस था, ये मैंने यहाँ माइनस मिस किया है. सो लेट मी जस्ट करेक्ट इट. दिस इज माइनस s1 0, और ये s चूँकि ये माइनस है और यहाँ पे ये माइनस था, ये प्लस होके दिस विल बी x ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट, और ये d1 जो है दिस विल बी इक्वल टू x. नंबर 2 में क्या है, माइनस x ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट 0 y ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट y 0 माइनस 1 0 0 0 0 0 1. सो ये देखेंगे x और y की फॉर्म में मेरे पास थीटास जो है वो आ गए. सो ये बिल्कुल एक सिंपल सा सवाल था जो हमने आज हल किया है. जस्ट टू गिव यू एन आइडिया दैट नोइंग द पोजीशन एंड ओरिएंटेशन मैट्रिक्स वी कैन गो बैक एंड फाइंड आउट द एंगल्स, फाइंड आउट द थीटास. सो दो वेरिएबल्स थे x एंड y जिनको देख के मैंने थीटा 1 जो है वो निकाल दिया. तो ये जहन में आपने रखना है. अब ये एक बिल्कुल सिंपल सी चीज़ थी. नेक्स्ट स्टेप में इंशाल्लाह कल और मे भी अगर हमें ज़रूरत हुई तो हम थर्ड वीक अगले वीक में भी इसी को देखेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम कल इसको क्लोज करेंगे विद बाय सॉल्विंग 2 or 3 मोर क्वेश्चंस जो कि इससे थोड़े से डिफिकल्ट लेवल होगा. तो दैट विल गिव यू एन आइडिया कि कैसे इसको हमने आगे लेके जाए. सो जी, यहाँ पे कोई सवाल. विद दिस आई हैव कम टू द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो प्लीज आस्क मी. व्हाट यू नीड टू डू इज, ये जो सवाल है जो मैंने अभी सॉल्व किया था ये आपके बुक में मौजूद है, लेकिन वो इस फॉर्म में मौजूद है, ये जो मैंने ये दिखाया था. सो ये जो इसके साथ मैंने मैथ इंक्लूड किया है इसको काइंडली जाके एक दफ़ा दोबारा सॉल्व करें, इसको एक दफ़ा देखें, इस लेक्चर को दोबारा सुन लें,
so that you are abreast for tomorrow कि हमने किस तरीके से अपनी जो है वो अननोन्स को फाइंड करना होता है। जी कोई क्वेश्चन यहाँ तक? Okay, if there is no question, जी पूछिए पूछिए। कोई क्वेश्चन नहीं है सर। Okay, thank you very much. So if there is no question, so let me just switch off this recording.